हेलो फ्यूचर टीचर्स वेलकम टू माय चैनल उत्कल मेधा मु अर्पिता आपण मन को स्वागत करुची पुणी गोटे नुआ वीडियो रे। तो फ्रेंड्स आज आमे 3000 सीडीपी मॉक टेस्ट सीरीज करिया पई जाउचू। जो माने भी पूर्व वीडियो सबू देखि नांती निहाती जाइकी देखि दियंतु 10टा क्लास ऑलरेडी सरी जाइची यार जोड़ा कि बहुत इम्पोर्टाट आपण मान सबू बछा बछा प्रश्न मु आपण मान नहीं आसी जाइए फ्रेंड्स। आउ एग्जाम आगु आपण मैंने निहाती ए क्वेश्चन सबू देखिकी जानतु आपण मानकर जो सीटेट एग्जाम अच्छी से तापाई एटा बहुत इम्पोर्टाट होगापाई जाउची फ्रेंड्स। पूरा आमर जेमती क्वेश्चन पड़े सेमती क्वेश्चन मु नहीं आसी आपण मान PYQ क्वेश्चन सबू अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जो गुड़ा बहुत इम्पोर्टाट तो तेणु आपण मैंने लास्ट पर्यंत वीडियोटी को देखंतु। आ जो माने भी चैनल नुआ अच्छी निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आ जदि वीडियोटी भल लगुची ताहले निहाती लाइक कर दियंतु। आ जदि किछि डाउट भी रहइबो ताहले मते कमेंट रे जणेबे। आमे आज बहुत गुड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवु ता सहित मु आपण मानकु थियोरी भी मने पकई देबी ता सहित आमे मेमोरी ट्रिक भी मु कहि देबी केमती मने रखिबे आपण माने। ठीक अछि पूरा संपूर्ण ओडिया भाषा रे आमे बहुत सरल उपाय रे सबू कथा मु आपण मानकु बुझेई देबी। ठीक अछि आपण माने लास्ट पर्यंत बस वीडियोटी को देखंतु। आ मॉक टेस्ट जेतु याकु मॉक टेस्ट बोली भाबिकी दबा पई चेष्टा करंतु आंसर दबा पई चेष्टा करंतु। आ आंसर पॉज कर दियंतु फास्ट तापरे आंसर दियंतु तापरे आंसर देखंतु। ठीक अछि पूरा एग्जाम भले आपण माने फील करंतु हैला। आ एमिति क्वेश्चन आपणकर एग्जाम रे पडिबो है। जदि ये डिटो क्वेश्चन न भी पड़े आपण मानकर जस्ट टिके बंके की क्वेश्चन पचारि पारे। आमे थियोरी तो सबू कंप्लीट कर सारी फ्रेंड्स ऑलरेडी चैनल ले अच्छी जाइकी देखि दियंतु प्लेलिस्ट बने देइछि मु। आ सीटेट रो भी हमर फास्ट यूनिट कंप्लीट हो जाइछि आ दीटा अच्छी सेटा भी आमे कवर कर दबा एग्जाम आगु आमे सबू कवर कर दबा। आ एबे मु जो जो क्वेश्चन आपण मानकु करौछि बस एगुडा सब देखि जानतु हैला। जो माने भी एसएसबी टीजीटी पई प्रिपेयर होचंती एलटीआर पई प्रिपेयर होचंती आरएचटी पई ओएसटीटी पई किछि भी पई जदि भी आपण माने प्रिपेयर होचंती ना क्वेश्चन जेतु रिपीट हुए तेणु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमर बहुत इंपोर्टेंट ए सब तेणु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आपण माने निहाती पूरा देखंतु। ठीक अछि आंसर द पई चेष्टा करंतु। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु फ्रेंड्स ए टीचर allows students to discuss different solutions to a problem before arriving at a conclusion। टीचर पिला मानकु एलाउ करूचंती डिफरेंट सॉल्यूशन होची डिस्कस करिया पई गोटे प्रॉब्लम रे हले गोटे प्रॉब्लम रे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन करिया पई से तांको पिला मानकु एलाउ करूचंती। दिस प्रैक्टिस मेनली प्रमोट्स एटा कौन प्रमोट करूची कोंतु एटा होची केवीएस 2023 रे क्वेश्चन पड़ीतिला हैला। तो आपण माने क्वेश्चन दवा पई चेष्टा करंतु कोन हबो ना हमर क्रिटिकल थिंकिंग कोन पई हैला भी मु सेटा भी आपण मानकु कहि दउची। देखो रोट लर्निंग तो केबे हबनी हमर एटा पैसिव लर्निंग तो हबो नाही एटा भी मेमोराइजेशन कथा एटा सब नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड रो वीडियो भी जो माने देखि नांती एते पर्यंत जाईकी देखि दियंतु फ्रेंड्स। बहुत गुडा क्लास ऑलरेडी हमर सरी गलानी। जदि भी आपण मानकर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकिन वीडियो दरकार ताले मते कमेंट रे जणांतु आ मु सेटा सब नेकी आसीबी। ठीक अछि देखंतु हमर टिके बुझिबा हमें considering different solutions requires learners to analyze compare and evaluate ideas thereby developing critical thinking। ठीक अछि ए सब जते बेले हमर किछि आइडिया को हम इवैल्यूएट करूछु किछि कंपेयर करूछु किछि जिंस एनालाइज करूछु सेते बेले हमर क्रिटिकल थिंकिंग हमर चली थाए डेवलप होई थाए नुई कि काहे कि हमर बहुत हमर पूरा ब्रेन स्ट्रॉम होई थाए। तो सेहित पई देखंतु डिफरेंट सॉल्यूशन जते बेले हम बाहर करिया पई जाऊ सेटा को हमर कोन कोजे एनालाइज। तो एनालाइज माने होची हमर क्रिटिकल थिंकिंग हमर डेवलप हो बुझी पाले समस्त फ्रेंड्स। देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following best represents learner centered pedagogy। कहतु हम learner centered pedagogy रे कोटा हबा पई जाउची। देखंतु हमरो केवीएस 2023 रे क्वेश्चन पडितला। देखंतु टीचर स्पीक्स throughout the lesson ना learners actively participate in constructing knowledge ना स्टूडेंट्स मेमोराइज टेक्स्ट बुक आंसर्स ना टीचर डिसाइड्स एवरी रेस्पॉन्स कौन हम जेहेतु से लर्नर सेंटर्ड पचारि तेणु आमर कौन हम ना आमर ऑप्शन बी देखो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पिला है तो सहीटा ही आमर बेस्ट आंसर हम। तो आमर
कौन हम फ्रेंड्स ऑप्शन बी हम है बुझी पारे समस्ते देखु ऑप्शन बी लर्नर सेंटर पेडागोजी gives students an active role through exploration, discussion, questioning and problem solving बुझी पारे समस्ते देखु लर्नर सेंटर हूँ लर्नर एक्टिव रहा सब बड़े देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी A teacher begins a lesson by asking students what they already know about the topic. This practice is useful because it देखंतु कही क्वेश्चन टा आपण मानक बुझे दूची जो टीचर कौन करूचंती ना स्टार्ट करूचंती गोटे लेसन केमती पिला मानकू पचारुचंती बहुत गुड़ा क्वेश्चन से जो टॉपिक टा से पढ़ाया पई जाउचंती बहुत गुड़ा क्वेश्चन फास्ट पिला मानकू पचारिया पई जाउचंती हैला दिस प्रैक्टिस इज यूजफुल से बहुत यूजफुल हम कौन पाई कहतु एक्टिवेट्स प्रायर नॉलेज ना प्रिवेंट्स डिस्कशंस ना एनकरेजेस रोट लर्निंग ना रिड्यूसेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ये सब देखो फ्रेंड्स एगुड़ा सब नेगेटिव वर्ड देइछि एगुड़ा तो हम ना आमर यहाँ देखु एक्टिवेट्स प्रायर नॉलेज जो पुराना नॉलेज जहाँ अच्छी पिला मानकर सेटा को एक्टिवेट करिया पई टीचर कौन करूचंती ना स्टार्ट करूचंती जे ताकू क्वेश्चन सब पचारुचंती बुझी पाले समस्त ऑप्शन ए देखंतु आंसर है आमर एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स connect new information with what they already know making learning more meaningful हैला कोटा से माने ऑलरेडी जानी चंती तांको ब्रेन रे को जिंस ऑलरेडी अछि सेट है कि जोटा हमें नुआ गोटे टॉपिक जते बेले पढ़िया पई जाउछु सेटा जानिया पई फास्ट ट्राई करबा निहाती आवश्यक देले हमें जते बेले तार पुराना नॉलेज को नुआ नॉलेज सहित रिलेट करिके पाठ पढ़ेबा ना सेते बेले पिलार मीनिंगफुल लर्निंग हबो बुझी पाले फ्रेंड्स समस्ते कोन हैला एडी देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन आपण माने भी आंसर दा पई फ्रेंड्स मो सहित चेष्टा करंतु बस पॉज कर दियंतु वीडियो टिको तापरे आंसर दा पई चेष्टा करंतु तापरे आंसर देखंतु हैला एटा मॉक टेस्ट आपण मान को पई मु आने की आसी जेतु देखंतु व्हिच स्टेटमेंट अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कहतु आमर से पचारि जो इंडिविजुअल डिफरेंस जो थाए लर्नर मानकर कोटा मोस्ट अप्रोप्रिएट देखंतु ऑल लर्नर्स हैव आइडेंटिकल लर्निंग नीड्स सेमती तो नुहे समस्त गोटे नीड तो केबे भी नुहे डिफरेंसेस शुड बी इग्नोर्ड सेमती तो केबे करबानी आमे आ देखंतु एरा कोन अछि लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड लर्निंग पेस एरा ठीक कथा डिफर हबो समस्त समान नुहंती सब पिला अलग अलग आइतांती एटा ओनली दिछि तो हबो नाही देखंतु एटा केबीएस 2023 रे पडितिला ताले भाबंतु केते इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हमर हला ऑप्शन सी देखंतु देखिबा हमर टिके एक्सप्लेनेशन लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज इंटरेस्ट एक्सपीरियंस लैंग्वेज बैकग्राउंड एंड लर्निंग पेस है पूरा सबू किसी जिनस पिला माने समस्तंकर अलग अलग अच्छी नुहे कि सब पिला समान नुहंती इफेक्टिव टीचिंग रिकॉग्नाइजेस दिस डिफरेंसेस जो इफेक्टिव टीचिंग जोटी हुए ना सेठी सबू किसी डिफरेंस टीचर को मन रे थाए तापरे ताकू नै कि टीचर पाठ पढ़ी थांती नुहे कि देखिबा हमर एवरी लर्नर इज इक्वल टू डिफरेंट लर्नर एटा मन रखिदेबे हैला समस्त अलग अलग लर्न करंती देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर चेंजेस द टीचिंग स्ट्रेटजी आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड द concept this is an example of देखंतु एटा कोथरे कहारो एग्जांपल से पचारि छी एटा होची हमर केबीएस टीजीटी 2023 रे पडितला ए क्वेश्चन देखंतु एठी होची कहि छी जे टीचर होची तांको टीचिंग स्ट्रेटजी टा को चेंज कर दोचंदी पिला मन को ऑब्जर्व कर सरला पर हैला हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट है जते पर्यंत अंडरस्टैंड करनांती टीचर सेते पिला माने सेते पर्यंत से पिला मन को ऑब्जर्व करूचंती हैला सेते पर्यंत से चेंज करनांती दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव यूज ऑफ असेसमेंट ना समेटिव यूज ऑफ असेसमेंट ना नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ना सर्टिफिकेट कोटा हबो फ्रेंड्स एटा होची हमरो कोन हबो फॉर्मेटिव है कहीं ड्यूरिंग द सेशन रे चलছে ड्यूरिंग द क्लासरूम रे चलছে नुहे कि पिला मान को फास्ट से बुझुचंती तापर ऑब्जर्व करूचंती तापर तांकर जहाँ भी पिला मानकर बुझी पारे टिके प्रॉब्लम हो जे सेटा को से बुझे दउचंती एमती सब करूचंती तो एही जो प्रोसेस जो चलीची सेटा कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट हे थाए ऑप्शन
ए है देखो द टीचर यूजेस एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन दिस मॉडिफाइड टीचिंग जोटा कि टीचिंग को मॉडिफाई करि थाए दिस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट रो इम्पोर्टेंट फीचर बुझी पाले समस्या देखंतु मेमोरी ट्रिक देखंतु एसएस तापरे फाइंड गैप तापरे चेंज टीचिंग तापरे जोटा एते सारा जिनस हो सारा पर कौन होची फॉर्मेटिव होची बुझी पाले समस्ते देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग ए लर्नर स्पेसिफिक मिसकनसेप्शंस बिफोर रेमेडियल टीचिंग हैला कौन होची ना कोटा कहतु जे मोस्ट सुइटेबल हम आइडेंटिफाइंग द लर्नर मान को आइडेंटिफाई करने स्पेसिफिक मिसकनसेप्शन जो मिसकनसेप्शन जहाँ भी हो जाए सेटा गोटे स्पेसिफिक मिसकनसेप्शन को दूर करने जो रेमेडियल टीचिंग टीचर देबे तापाई से कही कोटा हम कहतु सम्मेटिव असेसमेंट ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट ना अचीवमेंट रैंकिंग ना फाइनल एग्जामिनेशन कोटा हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट मु कही फ्रेंड डायग्नोस करा जिवो फास्ट टीचर डायग्नोस करूछंती एटी देखंतु डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज एंड मिसकनसेप्शंस हैला मिसकनसेप्शन कौन अच्छी पिला मानकर कौन तांकर लर्निंग डिफिकल्टीज अच्छी से सब डायग्नोस करिवे फास्ट टीचर सो दैट appropriate remedial teaching can be planned जहाँ पढ़ले कि remedial teaching plan करी हबो डायग्नोस्टिक होची डिटेक्ट द प्रॉब्लम हैला प्रॉब्लम को डिटेक्ट करा जाय परिबो देखंतु तापरे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी 587 नंबर क्वेश्चन देखो आम केते गुड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सारूनी फ्रेंड्स तो आपण मैंने गोटे पर गोटे पार्ट आमर चली तो लास्ट गुड़ा जो मैंने देखी ना निहाती से सब देखी दिंतु यारी भितर सबू पड़ो मु प्ले लिस्ट बनई देछि पूरा आपण मैंने किसी भी प्रॉब्लम हेनी आ वीडियो खोजापी जाकि आराम से देखी दिंतु जोटा दरकार आपण मानकर ए स्टूडेंट बिलीव्स दैट heavier objects always fall faster than lighter objects है से कही जे जो heavier objectटा सब बड़े तल को जो पड़े सेटा होची लाइटर ऑब्जेक्ट टू फास्ट पड़े से कही द टीचर प्रोवाइड्स एन एक्सपेरिमेंट दैट चैलेंजेस दैट दिस बिलीफ दिस मेनली इलस्ट्रेट से कही जो फास्ट होची जो भारी ओजन वस्तुटा तले पड़ो तापर हालुका वस्तुटा तले पड़ो यहाँ हूँ पिला माने कही तापर टीचर कौन करेंगे ना ये जो बिलीफटा को माने तांकर भूल प्रमाणित करने गोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे है सेटा को कहतु कौन करूँ सी रोड लर्निंग ना कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट ना पनिशमेंट ना ड्रिल प्रैक्टिस कौन यहाँ हूँ आमर ऑप्शन बी है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट देखो when new evidence contradicts an existing belief the learner experiences cognitive conflict बुझी पाले which can encourage restructuring of existing understanding बुझी पाले समस्ते देखंतु ओल्ड बिलीफ इज नॉट इक्वल टू न्यू एविडेंस है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जे सेटा होची कोन जोटा कि इक्वल टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टीचर बिहेवियर बेस्ट सपोर्ट्स ए साइकोलॉजिकली सेफ क्लासरूम कोटा कहतु को बिहेवियरटा हमर साइकोलॉजिकली सेफ क्लासरूम को सपोर्ट करि थाए पब्लिकली रिडिक्लिंग इनकरेक्ट आंसर ना आमर पनिशिंग स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन सेमती तो केबे भी करबानी आमे आउ होची एनकरेजिंग क्वेश्चंस एंड ट्रीटिंग एरर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आमर कंपेयरिंग स्टूडेंट्स पब्लिकली कहतु ऑप्शन सी रा देखंतु एनकरेज करबा हमें क्वेश्चन को सब एनकरेज करबा हला आउ जदि भी तार किछि भूल हो जाउची पिलार ताहले सेटा होची लर्निंग अपॉर्चुनिटी भाबरे हमें सेटा को नबा नुहे कि जोटी कि पिला पूरा कॉन्फिडेंट फील करबा ऑप्शन सी हबो आंसर देखंतु A psychologically safe classroom allows learners to ask questions, express ideas and make mistakes without fear of humiliation. हैला humiliation जेमती पिला को आमे केबे भी फील होवा पई दबानी हैला
सी तार निजे निजे क्वेश्चन करिवो तार क्वेश्चन रे जदि भी से भूल करूची किछि सेइथिरु से सिखिबो आउ आमे ताको जदि किछि फीडबैक दबा कथा दबा किछि प्रॉब्लम नै किंतु ह्यूमिलिएशन केबे करिबानी आमे क्लासरूम रे देखंतु सेफ क्लासरूम होची क्वेश्चन पचारिबो मिस्टेक भी करिवो आउ ताको रेस्पेक्ट भी करा जिवो बुझि पाले समस्ते देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो व्हिच स्टेटमेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट with the constructivist view of learning कहतु कौ स्टेटमेंटा होची मोस्ट कंसिस्टेंट हबो with constructivist view of learning रे learners actively construct knowledge from their experience एट तो बहुत बढ़िया कथा कहीं constructivist हमर सही कथा कही थाए एटा देखंतु knowledge ट्रांसफर जम्मा भी नुहे खाली डायरेक्टली लर्नर पाक खाली नॉलेजटा ट्रांसफर हो सेमती तो केबे भी हेनी मेमोराइजेशन हम ना लर्नर सुड पेसिव रमती हम ना ऑप्शन ए हम आंसर है बुझीपारे समस्ते देखंतु कंस्ट्रक्टिविज्म कंसीडर्स लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशंस हु कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय connecting new experiences with previous knowledge बुझीपारे कंस्ट्रक्टिविज्म होची हमर लर्नर्स कंस्ट्रक्ट्स लर्नर निजे कंस्ट्रक्ट करिवो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एटा होची हमर कंस्ट्रक्टिविज्म कहि थाए देखंतु ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन why they selected a particular answer rather than simply asking for the answer से कहि छी जे जने टीचर पिला को पचारुचंती एक्सप्लेन करिया पई जे व्हाई दे सिलेक्टेड पर्टिकुलर ए जो पर्टिकुलर आंसर ता कोन पई सिलेक्ट करा हेची रेदर देन सिंपली आस्किंग फॉर द आंसर खाली आंसर पचारुनांती से कोन पई हेला बोली पचारुचंती दिस मेनली एसएसएस एटा हमर केवीएस 2023 रे पडितला कोन एसएस करा होची फ्रेंड्स एथिरे देखंतु रिकॉल नुहे रीजनिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग एटा ही बढ़िया कथा लेखा हेची नै कि हायर ऑर्डर थिंकिंग पिलार कोन हेची नाही सेटा होची हमर टीचर होची एसएस करिया पई चाहुचंदी हैला नै कि सेट में ताको होची पूरा व्हाई कोन पई आंसरटा हला सेटा पचारुचंदी एगुडा तो हबो नाही एगुडा हबो नाही तो ऑप्शन बी हबो हम आंसर देखंतु आस्किंग व्हाई रिवील्स द लर्नर्स रीजनिंग प्रोसेस एंड एसएसएस डीपर अंडरस्टैंडिंग रेदर देन सिंपल रिकॉल बस खाली रिकॉल करके कही दबार नाही जो गुस्सा हेतिबो जोटा मने थिबो सेटा खाली कही दबार नाही से बुझुचंती जिनछडा डीपर अंडरस्टैंडिंग करूचंती जहा फल लागि जदी जने डीपर अंडरस्टैंडिंग करथिबो देले सिना व्हाई आंसर दे परिबो हैला सब बेले व्हाई टा क्वेश्चन करे जे रीजनिंग पई बुझी पाले समस्ते देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर आस्क्स लर्नर्स टू एक्सप्लेन हाउ दे अराइव्ड एट an answer instead of simply asking whether the answer is correct खाली आंसर कोन पई करेक्ट हला सेटा पचार नांती से होची कहउचंती जे केमिति आंसर पाखरे तुमे पहुंचिलो कुह व्हाट डज दिस प्राइमरीली एसेस कोन एसेस करूचे रीजनिंग नुई कि कोंतु रिकॉल रीजनिंग ना रिकॉग्निशन ना मे कोन रीजनिंग हबो आंसर हमर देखंतु जस्ट मु आ टिके आगु आपन को कहि कि आसिले एटा भी पढितला देखंतु केते इंपोर्टेंट क्वेश्चन एई टाइप रो क्वेश्चन आपन मान को एग्जाम रे पढुची हैला तो तेनु भलो भाबरे देखि कि जानतो आपन माने एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस अलाउज द टीचर टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स रीजनिंग थिंकिंग प्रोसेस एंड पॉसिबल मिसकनसेप्शन बुझी पाले समस्ते देखंतु हमर मेमोरी ट्रिक टिके देखि दबा हाउ डिड यू गेट इट केमिति तुमे एटा पाइलो एटा जते बडा क्वेश्चन करा जाय ना सेटे रीजनिंग कथा आसे हैला देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन एटा ओएबीएस 2022 रे पडितला Which practice is most appropriate for a teacher working with learners who have different learning needs? से कही को practice हमर most appropriate हबो कहंतु जेते बळे आमे टीचर वर्किंग विथ लर्नर टीचर जेते बळे तांगर लर्नर मान को सहित काम करूतबे who have different learning needs चाहर कि different learning needs सब अछि जो पिला मानकर different learning need अछि सेटा कहि कोटा हबो कहंतु use identical instruction for everyone ना lower expectation for some learners ना use flexible and differentiated teaching strategy एटा तो बहुत बढ़िया कथा लिखा है छी नुई कि आ एटा ओनली दी छी हबो नै एगुडा सब हबो नै ऑप्शन सी हबो हम आंसर देखंतु differentiated instruction adopts teaching approaches according to learners है जो भी टीचिंग अप्रोच हम चूज करबा सेटा होची लर्नर मान को नै कि हमें चूज करबा नीड्स
learners needs while providing meaningful learning opportunity है जिते आम मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा है बुझीपारे समस्ते देखो डिफरेंट नीड्स होची फ्लेक्सिबल टीचिंग देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पियाजेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंजर्वेशन डेवलप्स मेनली ड्यूरिंग व्हिच स्टेज से कही जे पियाजेट को द्वारा कहतु को एबिलिटीटा आमर कंजर्वेशन डेभलप करुच्ची कहतु मेनली ड्यूरिंग व्हिच स्टेज कौ स्टेज कंजर्वेशन मुझे फ्रेंड्स कंजर्वेशन एटा देखो केबीएस रे पड़ी 2023 रे तो केते इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमर कंजर्वेशन सी रु कही सी मन रखिए कंक्रीट ऑपरेशनल मुझे कही फ्रेंड्स आपण मानकु ऑप्शन ए देखो आंसर The ability to understand conservation develops during the concrete operational stage. Generally around केते रु केते देखंतु 7 रु 11 years हैला concrete होची conservation एमती मन रख देबे C for concrete C for conservation. A learner can complete a difficult task with appropriate guidance but can't yet complete it. है जो टीचर कौन करुच्ची ना डिफिकल्ट टास्क को से गाइडेंस रे करि पारुची है किंतु माने डिफिकल्ट विथ अप्रोप्रिएट गाइडेंस है गाइडेंस रे करि पारुची बट किंतु एते पर्यंत कंप्लीट करि पारुनी निजे निजे करके कंप्लीट करि पारुनी दिस टास्क लाइज विद इन द लर्नर सेटा केबीएस टीजीटी रे पड़ीथिला फ्रेंड्स तो जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मु तो कहितली आपण मानकु जो पिला जोटा करि पारेनी तापर टेम्पररी सपोर्ट आसे ताकू जो मोर नॉलेजेबल अदर माने आसी ताकू हेल्प करितांती सेई सब को हमर कोटा हेते सेटा हमर जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑप्शन बी जोटा भाइगस्की आमर कही देखो भाइगस्की जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट ए लर्नर कैन accomplish with guidance but can't yet accomplish independently है निजे से करि पारुनी कहार गाइडेंस सेते बळे मिलुची से बहुत बढ़िया से सॉल्व कर दोची देखो can't alone निजे करि पारुनी प्लस कैन विथ हेल्प द्वारा किंतु करि पारुची जोटा कि हम कोन को जेडपीडी जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ बेंतुराज सोशल लर्निंग थ्योरी कहतु बेंतुराज सोशल लर्निंग थ्योरी कोडा जाउची देखंतु फ्रेंड्स लर्निंग अकर्स ओनली थ्रू डायरेक्ट रेनफोर्समेंट लर्निंग इज अनरिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन learning can occur through observing others and learning depends only on biological maturation कोटा हबो फ्रेंड्स लर्निंग occurs only through direct reinforcement तो केबे भी हबनी reinforcement खाली कर देले हबो नाही ओनली भी देछि तो एटा केबे भी हबनी फ्रेंड्स हैला देखिबा हमरो तापरे हमरो देछि लर्निंग इज अनरिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन सेट सेमति तो नुहे अनरिलेटेड तो नुहे एटा भी नुहे देखिए लर्निंग कैन अकर थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स ना लर्निंग डिपेंड्स ओनली देछि एटा हबो नाही एटा ही बढ़िया कथा ऑब्जर्विंग अन्य को ऑब्जर्व करिवो तापर से सिखिबो नुहे कि देखंतो हमर बेंदुरा कहिदिले बाबोडल एक्सपेरिमेंट करथिले एटा समस्त जानि छथि बेंदुरा एम्फसाइज्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मॉडलिंग एंड इमिटेशन लर्नर्स कैन एक्वायर बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स हैला आउ का को देखि कि लर्नर सिखि थाइ जोटा मॉडल मान को बेंदुरा होची ऑब्जर्व मॉडल लर्न ए सब विषय से कहिथिले देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ए लर्नर स्टडीज मैथमेटिक्स बिकॉज सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज पर्सनली एंजॉयबल हैला लर्नर कोन करूचंती ना मैथमेटिक्स स्टडी करूचंती कोन पई बिकॉज सॉल्विंग मैथमेटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लमटा सॉल्व करबा होची पर्सनालिटी को कोन एंजॉयबल बनै थाए एटा कहार एग्जांपल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ना नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही हम कहीं एंजॉय करूची जेतु पर्सनालिटी तार एंजॉयबल होची माने एटा होची कोन हबो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बुझी पाले समस्त फ्रेंड्स कोन पई हैला द लर्नर इज मोटिवेटेड बाय एंजॉयमेंट एंड इंटरेस्ट in this activity itself therefore it is intrinsic motivation बुझी पाले समझे एटा कोइ मोर intrinsic motivation को जाते हैं enjoyment from inside होची intrinsic एटा तो हेता एटा समझे जानि छथि देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन which assessment provides information about students learning while instruction is still taking place से कहि जे देखंतु
असेसमेंटा आमर प्रोवाइड करि थाए इनफॉरमेशन अबाउट स्टूडेंट मान को नहीं कि इनफॉरमेशन माने प्रोवाइड करि थाए लर्निंग व्हाइल इंस्ट्रक्शन स्टिल टेकिंग प्लेस इंस्ट्रक्शन होची स्टिल टेकिंग प्लेस देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट ना समेटिव असेसमेंट ना फाइनल एग्जामिनेशन ना सर्टिफिकेशन असेसमेंट कोटा हम फ्रेंड्स जो कि पिला मानकर जो इनफॉरमेशन से प्रोवाइड करि थाए कोटा हम ऑप्शन ए फॉर्मेटिव मैंने ऑब्जर्व करा जाए पिला मान को देखंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एंड प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन बुझी पाले तो हमर फॉर्मेटिव असेसमेंटा होची ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग रे हमर हेई थाए देखो तो फॉर्मेटिव होची ड्यूरिंग लर्निंग रे हेई थाए देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन A teacher discovers through questioning that many students have the same misconception and changes the lesson accordingly. Hela. This demonstrates the use of assessment for कही कौन हम आमर जो टीचर कौन करुँचे ना डिस्कभर करुँच क्वेश्चनिंग मध्यम बहुत गुड़ा स्टूडेंट कौन करुँचे ना मिसकनसेप्शन किसी रही जाइए सेटा हूँ लेसन तापरे से कौन करुँचे ना चेंज कर दौरान अकॉर्डिंगली सेटा देखिकी यहाँ कौन डेमोन्स्ट्रेट करुँची कहतु लर्निंग इम्प्रूवमेंट ना लर्निंग इम्प्रूवमेंट ही हम नुहे कि ऑप्शन बी हम देखु असेसमेंट फॉर लर्निंग uses information about students understanding to identify gaps and modify teaching जोटी सी देखिले बुझिले पिला मन को मिसकनसेप्शन हो जाइए है सेटा ड्यूरिंग लेसन रही ड्यूरिंग सेसन रही था तो तेणु आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट देखो नुहे कि देखु एसेस होची आइडेंटिफाई गैप गैप को आइडेंटिफाई करते जो इम्प्रूव करे देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट demonstrates constructivist learning कहतु को क्लासरूम सिचुएशनटा आमर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होता है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे स्टूडेंट्स कॉपी द टीचर्स नोट साइलेंटली स्टूडेंट्स मेमोराइज डेफिनेशन रिपीटेडली the students investigate a problem and develop their own explanation the students reproduce the textbook exactly कौन हम फ्रेंड्स ऑप्शन सी है ऑप्शन सी ही बहुत बढ़िया कथा लिखाई तो ऑप्शन सी ही हम आम आंसर बुझीपारे समस्ते देखंतु कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एक्टिवली एक्सप्लोर इन्वेस्टिगेट एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग है कंस्ट्रक्टिविज्म होची एक्सप्लोर प्लस कंस्ट्रक्ट बुझीपारे समस्ते देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन which teacher behavior is most likely to encourage students to participate freely in classroom discussion से कही जे को टीचर बिहेवियर टा कहतु मोस्ट लाइकली टू एनकरेज जोटा एनकरेज करने होता है पिला मानू टू पार्टिसिपेट करने फ्रीली है इन क्लासरूम डिस्कसन रे कहतु कौन हम एक्सेप्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ आंसर ना criticizing incorrect responses publicly ना comparing students answers ना creating a respectful environment where mistakes are treated as opportunity बुझी पाले opportunities to learn है लर्न करिबार opportunity एटा ही बहुत बढ़िया कथा लिखाई तो आमर आंसर हम ऑप्शन डी बुझी पाले समस्ते एटा ही हम आंसर आमर देखंतु A respectful and supportive classroom encourages students to ask questions, express ideas and learn from mistakes without fear. है safe environment होची free participation, better learning. देखिए हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन ए चाइल्ड इज अनेबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम जोने अनेबल होची सॉल्व करिया पई प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली जानि छे बट सॉल्व्स इट सक्सेसफुली विथ द टीचर्स गाइडेंस से टीचर गाइडेंस रे सक्सेसफुली सॉल्व कर दोची अकॉर्डिंग टू भाइगस्की दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट भाइगस्की को द्वारा को सिचुएशन होची कोंतु एसिमिलेशन एकोमोडेशन ना हमरो रेडीनेस ना जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन हम आमर जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोटा भाइगस्की आमर कहितले देखंतु द जेडपीटी इज द गैप बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट द लर्नर कैन accomplish with guidance बुझी पाले एलोन नो प्लस हेल्प यस
ହେଉଛି ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ZPD ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ Which classroom practice is most consistent with a constructivist approach to learning से कहिछि जे को क्लासरूम प्रैक्टिसटा कहंतु मोस्ट कंसिस्टेंट हबो जोटा कि हमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग हैला हमर सेटा सीटेट एग्जाम रे पडितला 2024 रे देखंतु स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस एटा हबो ना हमर टीचर प्रोवाइड्स ऑल नॉलेज डायरेक्टली ना स्टूडेंट्स मेमोराइज डेफिनेशंस ना स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस टेक्स्ट बुक आंसर्स कोटा हबो हमर ऑप्शन ए रे देखंतु केते बढ़िया कथा लिखा हिची एटा ही परिबो स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस एटा हला ऑप्शन ए हबो हम आंसर देखंतु कंस्ट्रक्टिविज्म होची व्यूज लर्नर्स एज एक्टिव लर्नर एक्टिवली हेकी थाए पार्टिसिपेंट्स हु कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग प्रायर एक्सपीरियंस एंड न्यू इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिविज्म होची लर्नर होची कंस्ट्रक्ट करबा देखिए हमर नेक्स्ट क्वेश्चन According to Piaget, a child who can understand conservation and classification is most likely in the कहतु आमर एटा CTET रे पढ़िथिले आमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे 2023 रे देखंतु तो से तो पचारि जे हमर कंजर्वेशन कथा हमर कोन हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे मु कहिथिली आपण मानको एटा जस्ट हम करिकि बे आस्तिलु कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन लॉजिकल थिंकिंग एगुडा सब हमर कंक्रीट ऑब्जेक्ट विषय रे एगुडा सब हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे हेइ थाए हैला कंक्रीट होची कंजर्वेशन प्लस क्लासिफिकेशन एम्ति मन रख देबे सी फॉर मन रख देबे ए टीचर गिव्स स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट बिटवीन टू मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज हैला दीटा लर्निंग एक्टिविटीज रो गोटे सिलेक्ट करिया पई टीचर होची ताको पचारुचंदी हैला जोटा देखनु कोन होबाटा पनिशमेंट हबो ना लर्नर ऑटोनॉमी ना रोट लर्निंग पेसे कोन हबो लर्नर ऑटोनॉमी नु कि ऑप्शन बी हबो देखंतु प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइसेस प्रमोट्स ऑटोनॉमी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग हैला चॉइस होची ऑटोनॉमी बुझी पाले समस्त देखिबा हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following best describes formative assessment? कोटा हमर formative assessment रो best describes देखंतु हमर एटा CTET PYQ क्वेश्चन देखंतु पढितिला assessment used only for certification ना assessment conducted only at the end ना assessment used during learning to improve instruction एटा ही बढ़िया कथा लिखा हिची एटा ही परिबो assessment used only for ranking कोन हबो ऑप्शन सी हबो हला देखंतु formative assessment provides information during learning and helps teachers and learners improve performance बुझी पाले समस्ते formative होची for improvement देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन a teacher asks students to explain different possible solutions to a problem हैला टीचर होची देखुचंती आस्क स्टूडेंट जिनको आस्क करचंती एक्सप्लेन करिया पई डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन गोटे प्रॉब्लम रो दिस मेनली डेवलप सेटा कोन डेवलप करबो हमर डाइवर्जेंट थिंकिंग नो कि ऑप्शन बी देखिबा हमर जनरेटिंग सेवरल पॉसिबल सॉल्यूशंस इज एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी आ फ्लेक्सिबिलिटी हैला ए सब जिंस होची हमर एसोसिएटेड विथ हमर डाइवर्जेंट थिंकिंग रे देखंतु मेनी आंसर जोतरे आसीबो सेटा को हम कहबा डाइवर्जेंट देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन which statement about intelligence is most consistent with contemporary educational psychology हमर एटा CTET रो क्वेश्चन देखंतु हमर 2022 रे पढितिला intelligence is completely fixed the intelligence is identical to examination marks हमर इंटेलिजेंस कैन इम्प्रूव डिफरेंट एबिलिटीज ना इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन ओनली होबनी हमर एटा देखंतु ऑप्शन कोन हम ऑप्शन सी हैला एटा ही ठीक कथा लिखाई छी इंटेलिजेंस कैन इम्प्रूव डिफरेंट एबिलिटीज देखंतु मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स recognize intelligence as involving multiple abilities and acknowledge the influence of both heredity and environment हैला heredity और environment दीटा को नै कि हमर हेइ थाए पिलार इंटेलिजेंस होची मार्क्स ओनली रे केबे भी फोकस करेनी देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन
गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फासाइजेस दैट कौन एम्फासाइज करूची देखंतु गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस टा ऑल चिल्ड्रन हैव एक्जेक्टली द सेम एबिलिटीज ना इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज ना ओनली लिंग्विस्टिक एबिलिटी इज इम्पोर्टेंट ना हमर इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप कोटा बो इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज नुहे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी जते बळे पिला मानकर थाए सेही पिला को आमे कहबा से होजी इंटेलिजेंट पिला नुहे कि ऑप्शन बी देखिबा हमर गार्डनर proposed multiple forms of intelligence including linguistic, logical, mathematical, spatial, musical, bodily kinesthetic एगुड़ा सबू आउ interpersonal and intrapersonal सबू देखो एम होची मिनी इंटेलिजेंस देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए लर्नर हु अंडरस्टैंड्स एंड interacts effectively with other people demonstrates mainly कहतु कौन हम आमर लर्नर होची जे कि अंडरस्टैंड करे बुझी पारे आउ इंटरेक्ट करि पारे इफेक्टिवली से होची कहतु कौन हम स्पाइटल इंटेलिजेंस ना म्यूजिकल इंटेलिजेंस ना हमर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ना इंट्रापर्सनल कोटा हम फ्रेंड्स आमर ऑप्शन सी हैला इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहीं आउ जन कथा आसी देखो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग इफेक्टिवली विथ अदर्स है इंटर होची इंटरेक्शन देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन आपण माने आंसर दा पे चेष्टा करंतु सब क्वेश्चन ए लर्नर हु हैज ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन इमोशंस एंड स्ट्रेंथ्स डेमोन्स्ट्रेट्स कहंतु कोन हबो स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कोन करूची इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ना स्पाइटल इंटेलिजेंस ना म्यूजिकल इंटेलिजेंस ना इंट्रापर्सनल कौन हम फ्रेंड्स एटा होची गुड अंडरस्टैंडिंग ओन इमोशन देखो ओन अच्छे फ्रेंड्स निज कथा तो निज कथा जिते बड़े आसो आमर कौन हम मुझे कही इंट्रापर्सनल ना इंट्रापर्सनल है देखो ऑप्शन डी देखो ऑप्शन डी हम आंसर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन फीलिंग्स तार निज कथा जिते बड़े कही से बड़े आमर इंट्रा हम मुझे कही आउ अलग कथा अलग लोकों कथा जिते बड़े कह से इंटर हम कही फ्रेंड्स एटा देखो मोटिव्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है इंट्रा होची इनसाइड सेल्फ देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन विथ डाइवर्स लर्निंग नीड्स कहतु कौन हम कौ अप्रोचटा मोस्ट अप्रोप्रिएट हम टीचिंग चिल्ड्रेन विथ डाइवर्स लर्निंग नीड हम कहतु डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ना आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ना परमानेंट एबिलिटी ग्रुपिंग इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कोटा हम फ्रेंड्स आमर ऑप्शन ए देखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहीटा ही हो पार देखिए आमर टे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मॉडिफाइज टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड्स है लर्नर मान नीड को लेकिन एबिलिटी को लेकिन इंटरेस्ट को लेकिन आउ प्रायर नॉलेज को लेकिन आमर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो पार जोटा कि मॉडिफाई कर टीचिंग को है टीचिंग को आम मॉडिफाई करवा पिला को बुझिकी पिला लर्निंग नीड को बुझिकी नुहे कि देखो डिफरेंट लर्नर्स हो डिफरेंट सपोर्ट सब लर्नर को डिफरेंटली आम सपोर्ट करवा जेहेतु समस्ते अलग देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन इनक्लूसिव एजुकेशन प्राइमेरीली मीन्स इनक्लूसिव एजुकेशन माने कौन ये समस्त जानते गोटे क्लासरूम रे टुगेदर समस्ते मिसिकी जिते पाठ पढ़ते सहीटा आमर होता है नुहे कि देखो कौटा हम टीचिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी सेपरेटली सेमती केबे भी नुहे एजुकेटिंग डाइवर्स लर्नर्स टुगेदर विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट हाँ बढ़िया कथा लिखाई गिविंग आइडेंटिकल जमा भी नुहे एक्सक्लूडिंग टी लर्नर्स हु नीड एटा भी हम ना तो ऑप्शन बी हम आम आंसर देखो इनक्लूजन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इन common learning environments with necessary support and accommodation है inclusion रो माने होची participate करिबा कोथरे ना of diverse learners in common teaching environment गोटे टीचिंग एनवायरनमेंट रे सब प्रकार पिला बसिकी पाठ पढ़िबे inclusion होची together plus support है मिसिकी पढ़िबे ता सहित with support टीचर होची फैसिलिटेटर भाव रे काम करिवे देखिबा हमरो which classroom practice is least consistent with inclusive education जोटा कि कम consistent को तो inclusive education ने peer support ना flexible teaching ना removing children who need
एडिशनल सपोर्ट ना एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल्स कोटा हम रिमूविंग चिल्ड्रेन हु नीड एडिशनल सपोर्ट एमती तो केबे भी करवा कथा नुहे जोटा कि लिस्ट कंसिस्टेंट जेहेतु पचारि तो यहाँ ही हो पार बट एगुड़ा सब देखो बहुत बढ़िया कथा लिखाई एटा भी बढ़िया कथा एटा भी बढ़िया बढ़िया बट ऑप्शन सी टा ही बेकार कथा लिखी जे आम कौन करवा ना रिमूव करदे चिल्ड्रेन सेमती केबे भी करवानी है देखो आम सीटेट रे पढ़ी क्वेश्चन एक्सक्लूशन कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है एक्सक्लूशन आम केबे भी करवानी inclusion 6 participation rather than segregation है participation रे focus करे हमर inclusion होची not exclusion है देखो तो next question a teacher treats errors made by learners as useful information about their thinking है कौन ला ना जड़े टीचर कौन करूचंती ना ट्रीट करूचंती एरर जहाँ भी पिला भूल करूची सेटा यूजफुल इनफॉरमेशन को नेकी अबाउट देयर थिंकिंग ताको थिंकिंग को देखिकी दिस अप्रोच इज एटा कोंतु कौन हबो चाइल्ड सेंटर ना पॉजिटिव ना रोट बेस ना टीचर कौन हबो चाइल्ड सेंटर नुई की काई ना लर्नर मान को भूल को देखिकी टीचर होची थिंक करूचंती भाबुचंती नहीं कि ऑप्शन ए है टीचर फैसिलिटेटर भाव में काम कर एरर्स कैन रिवील मिसकनसेप्शंस एंड हेल्प टीचर्स प्लान फर्दर इंस्ट्रक्शन है जो पिला माने भूल कले भी पाखर शिखिकी आम कौन करवा नेक्स्ट हूँ जहाँ भी एक्शन नहीं कि आसवा जहाँ भी प्लान करवा से सब को ध्यान में रखिक नुहे कि ए चाइल्ड सेंटर टीचर यूजेस एरर्स कंस्ट्रक्टिवली है से हूँ जहाँ भी भूल होता है सेटा को सी आमर कंस्ट्रक्टिवली नहीं था देखो आमर एरर होची लर्निंग क्लब देखा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग कोटा कहतु हायर ऑर्डर थिंकिंग रे आमर होता है सीटेट जो पढ़ी था आम 2024 रे पढ़ी देखु हु now what is the definition now when did it happen now why do you think this solution works जेहेतु पचारि आमर कोटा आमर हायर ऑर्डर थिंकिंग हम तो आमर ऑप्शन डी हम है देखा why questions requiring justification encourage reasoning है reasoning को encourage करता है analysis and evaluation है देखो why plus justify होची hot's higher thinking skill देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर कनेक्ट्स ए न्यू लेसन विथ स्टूडेंट्स है नुआ लेसन को स्टूडेंट सहित कनेक्ट करूचंती है स्टूडेंट रो जहाँ भी नॉलेज अच्छी नहीं कनेक्ट करा प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेकिन दिस इज इम्पोर्टाट बिकज एटा बहुत इम्पोर्टाट कौन पाई देखो सीटेट रे पचारि 2022 रे प्रायर नॉलेज सपोर्ट्स न्यू नॉलेज हाँ यहाँ ठीक कथा भल कथा लिखाई पुराना नॉलेजटा आमर नुआ नॉलेज को सपोर्ट करें मेमोराइजेशन तो हेनी बिकम्स अननेसेसरी जमा नुहे स्टूडेंट्स बिकम पैसिव सेमती नुहे है देखो आमर कौन हम ऑप्शन ए हम आंसर देखो न्यू नॉलेज इज अंडरस्टूड मोर मीनिंगफुली when learners connect it है with their existing knowledge and experience already जो knowledge अच्छी तार experience अच्छी से जिनस को कनेक्ट करके आम पढ़े था से जिनसा लॉन्ग टर्म पर्यंत पिला मानकर मन रुहे ओल्ड प्लस न्यू होची मीनिंग देखो अकॉर्डिंग टू भाइगस्की द रोल ऑफ ए मोर नॉलेजेबल पर्सन इन लर्निंग इज मेनली टू एटा कहतु कौन हम मोर नॉलेजेबल पर्सन को लेकिन कौन हम प्रोवाइड परमानेंट डिपेंडेंस तो हेनी फैसिलिटेट बढ़िया कथा लगे फैसिलिटेट लर्निंग थ्रो एप्रोप्रिएट सपोर्ट हाँ आम सपोर्ट देकी पिला मानकु हेल्प करवा फैसिलिटेट करवा उचित प्रिवेंट इंडिपेंडेंट थिंकिंग सेमती नहीं गिव ऑल आंसर डायरेक्टली सेमती डायरेक्ट आंसर देदेले कौन पिलार किसी भी डेभलप हेनी नुह कि ऑप्शन बी ही बहुत बढ़िया कथा लिखाई तो ऑप्शन बी हम आम आंसर देखु टीचर्स और मोर नॉलेजेबल peers provide temporary support that enables learners to perform tasks they can't yet complete independently है more knowledgeable other देखिबा हमर next the temporary support provided to a learner and gradually withdrawn as competence develops is called कहतु से कही जोटा टेम्पररी सपोर्ट जो प्रोवाइड करा जाए लर्नर मान को है
gradually withdrawn as competence develops होता है कौन कहतु कंडीशंस ना रेनफोर्समेंट ना स्काफोल्डिंग ना पनिशमेंट कौन हम फ्रेंड्स आमर स्काफोल्डिंग है स्काफोल्डिंग जो टेम्पोरारी हेल्प देखो scaffolding is temporary instructional support that is reduced as the learner becomes more independent ହେଲା लर्नर को मोर इंडिपेंडेंट बनवार अच्छे देखो सपोर्ट तापर है रिड्यूस तापर है इंडिपेंडेंट बुझीपारे समस्ते देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बेंदुरा चिल्ड्रेन कैन लर्न बिहेवियर बाय कहतु कौन हम बिहेवियर लर्न कर बेंदुरा आमर कौन ऑब्जर्विंग मॉडल्स है मॉडल को ऑब्जर्व करके नुह कि ऑप्शन ए हम देखो बेंदुरास social learning theory emphasizes observational learning and modeling है बेंदुरा हूँ ऑब्जर्व कर इमिटेट कर देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स ए बिहेवियर और स्टूडेंट्स सब्सिक्वेंटली इमिटेट इट है जो टीचर कौन कर डेमोन्स्ट्रेट करुँच बिहेवियर को पिला मानकर जो सब्सिक्वेंटली इमिटेटेड जोटा पिला माने जो देखिकी तांको करिया पई चेष्टा करूछंती दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोंतु कोटा अब एटा सीटेट रे पडितिला 2023 रे इनसाइड लर्निंग ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ना एटा कोन पिला इमिटेट करूची से ऑब्जर्व करूची ना कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हैला जोटा हमर बेंदुरा देइथिले बाबडल एक्सपेरिमेंट करथिले मॉडल मान को देखिकी पिला सिखंती देखंतु लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अनदर पर्सन बिहेवियर इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है एटा को हम कोन को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मॉडल होची ऑब्जर्वेशन जो इमिटेशन हे परबा हम देखिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग रेनफोर्समेंट जनरली जो स्किनर जो हमर ऑपरेंट कंडीशनिंग देइथिले सेटार कही रेनफोर्समेंट जनरली कौन हम कहतु डिक्रीजेस बिहेवियर ना हैज नो इफेक्ट ऑन बिहेवियर ना इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ ए बिहेवियर ना प्रिवेंट्स लर्निंग कौटा हम आमर ऑपरेंट कंडीशनिंग रे कौन हम फ्रेंड्स ना आमर ऑप्शन सी है इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर देखिए आमर रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथेन्स बिहेवियर एंड इंक्रीजेस द probability that it will occur again है बुझीपारे रेनफोर्समेंट हूँ बिहेवियर देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर praises a student immediately after the student completes a task correctly जेतेबेले गोटे पिला करेक्टली ता टास्क करके आसुची टीचर कौन करूचंती ना ताको होची अप्रिशिएट करूचंती ताको प्रेज करूचंती प्रशंसा करूचंती तार दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एटा कहतु कौन एग्जांपल पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ता ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ला जापले से आहुरी भलो करिया पई चेष्टा करबो न कि ऑप्शन ए देखंतु प्रेज इज एडेड following the described behavior to increase the likelihood of that behavior recurring बुझीपारे एड प्रेज होची पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हैला पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को जाइया को देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा हमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नो एग्जांपल कहंतु सीटेट पीवाईक्यू क्वेश्चन पडिथिला क्वेश्चन बेस्ड 2024 है स्टडिंग टू गेट ए प्राइज ना स्टडिंग बिकॉज द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग होता है ना आमर स्टडिंग टू एवॉइड पनिशमेंट को एवॉइड करने होता है ना स्टडिंग टू रिसीव हायर मार्क्स खाली हायर मार्क को रखिदेवाई होता है नुहे कि सेटा ही कही तो कौटा हम फ्रेंड्स आमर आंसर ऑप्शन बी देखो स्टूडेंट्स बिकॉज द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग है स्टडिंग बिकॉज द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग जड़े इंटरेस्टिंग अच्छी बोली सब्जेक्टा पढ़ुची से इंट्रिंसिक मोटिवेशन हम जोटा भितर आसूची सी एंजॉय करुची इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट आउ एंजॉयमेंट एंड सैटिस्फैक्शन विद इन द एक्टिविटी इटसेल्फ है देखिए आमर नेक्स्ट इंटरेस्ट हूँ इनसाइड रू आसता है इंट्रिंसिक होता है व्हिच ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हम कहतु रीडिंग बिकॉज वन एंजॉयज रीडिंग ना सॉल्विंग पजल्स फॉर
pleasure na studying to obtain a reward na exploring a topic about the curiosity कोटा हबो फ्रेंड्स हमर ऑप्शन सी है syllabus सॉरी स्टडिंग टू हमर ऑब्टेन ए रिवार्ड है आम रिवार्ड पाई जो पिला पाठ पढ़ुची हमर सेटा कोन एटा होची एक्सट्रिंसिक हे परबो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जोड़ा बाहर आसी थाए कहि एटा आपण मानकू से पढ़ुची एइति पई ताकू गिफ्ट मिलिबो ताकू रिवार्ड मिलिबो नै कि स्टडिंग भूल पढ़ुतले देखिबा हमर द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल रिवार्ड मेकिंग इट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बुझी पले एक्सटर्नल रिवार्ड होची एक्सट्रिंसिक बाहर जोटा आसी थाए which practice is most likely to promote intrinsic motivation कोंतु कोटा intrinsic motivation हे परिबो से पचारि छी हमर पब्लिक कंपेयर एटा त नुए एटा नुए आ constant punishment सेमते नुए giving rewards for every task सेमते नुए एटा extrinsic एटा हे परिबो providing meaningful choices and challenging task एटा हो हमर से जेतु पचारितला intrinsic motivation तनो हमर कोन हबो जे प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइसेस हबा दरकार आउ चैलेंजिंग टास्क हबा दरकार देखो ऑप्शन डी हबा देखिबा ऑटोनॉमी मीनिंगफुल चैलेंजेस एंड इंटरप्ट सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स कैन स्ट्रेंथन इंट्रिंसिक मोटिवेशन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को स्ट्रेंथन करि थाए चॉइस प्लस चैलेंज आउ इज इक्वल टू कोन मोटिवेशन देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन which statement about development is most appropriate कहतु कोटा होची most appropriate हबो जोटा हमर CTET PYQ क्वेश्चन एटा 2024 रे पढिथिला development occurs only physically development is multidimensional development stops during childhood development is completely identical for every child हाँ एटा ठीक कथा एटा भी ठीक कथा किंतु सी जेतु पचारची मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट तो ऑप्शन बी एटा जो मु कहितली जे डेवलपमेंट होची मल्टी डायमेंशनल बोली नुए कि ऑप्शन बी है ना ऑप्शन बी हबो देखंतु डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल लैंग्वेज मोरल एगुडा सब जाउची नुए कि देखंतु डेवलपमेंट होची मेनी डायमेंशन है बहुत गुड़ा डायमेंशन रे हमर हे थाए देखंतु हमर ऑप्शन कोन हबो ऑप्शन बी देखंतु देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट जनरली प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टॉय मु कहितली दीटा जिंस अछि गोटे होची हेड टू टॉय आ गोटे होची सेंटर टू पेरिफेरी तो सेंटर टू पेरिफेरी हमर प्रॉक्सिमोडेस्टल हबो आउ हेड टू टॉय होचु सेंटर टू पेरिफेरी जो सॉरी हमर सेफालोकोडाल हबो हैला तो हमर कोन हबो से जेहेतु पचारितिला हमर हेड टू टॉय ताले हमर कोन हबो आंसर सेफालोकोडाल डेवलपमेंट हैला ऑप्शन बी देखंतु कोन पई हैला भी बुझेई देली मु आपण मानकू मने केमती भी रखिबे कहि देली देखंतु सेफालोकोडाल मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड रीजन डाउनवर्ड टुवर्ड द फीट हैला सेफालो होची हेड तापरे कोडाल आउ होची लोअर हैला बुझी पाले समस्या देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड द एक्सट्रीमिट्स इज नोन एज कहंतु कोन हबा हमर प्रॉक्सिमोडेस्टल डेवलपमेंट सेफालोकोडाल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट कोटा हबो प्रॉक्सिमोडेस्टल डेवलपमेंट नुए कि देखंतु देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन proximodistal development proceeds from the center or proximal parts of the body toward the distal parts हैला proximal होची distal आउ center होची outside बुझी पाले समस्या देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन which statement best describes the relationship between heredity and environment कोंतु heredity और environment कोन हबो ओनली हेची हबो नाही बोथ इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एटा सत्य कथा इंटरेक्शन रे हमर इन्फ्लुएंस करे से डेवलपमेंट को तो ऑप्शन सी हबो आंसर देखंतु डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हैला एटा होची गोटे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हेई थाए देखंतु बिटवीन जेनेटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस हैला
हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट है कौन हुए डेवलपमेंट हुए पिलार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर शुड कंसीडर ए चाइल्ड्स होम एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस बिकॉज दे कहतु कौटा हम आमर से कही जड़े टीचर कौन करा कनसीडर करुँच जो चाइल्ड होम आउ कल्चरल एक्सपीरियंसेस तार जहाँ अच्छे से कौन हो देखो have no effect on learning na can influence learning and development na determine intelligence completely na replace classroom teaching कौन हम can influence learning and development एटा बढ़िया कथा लिखा है तो ऑप्शन बी हम आंसर आमर देखो चिल्ड्रेन being prior experience language cultural practices and knowledge to school all of which can influence learning है होम एक्सपीरियंस होची क्लासरूम लर्निंग देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन सोशलाइजेशन रेफर्स प्राइमरीली टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच चिल्ड्रेन मान द्वारा ये जो जिनसा सोशलाइजेशन कही से कौन हम डेवलप फिजिकल स्ट्रेंथ लर्न सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स ना आमर मेमोराइज कथा ना डेवलप ओनली एटा तो हेनी दुटा हेनी आमर कौन हम लर्न सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एटा बढ़िया कथा लिखाई ऑप्शन बी हम आंसर देखो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच चिल्ड्रेन लर्न वैल्यूज नॉर्म्स बिहेवियर्स एंड वेज ऑफ इंटरैक्टिंग विद इन सोसाइटी है सोसाइटी रे जो पिला तार सोशलाइजेशन जो हुए सेटा होची पिला कौन शिखे वैल्यूज शिखे नॉर्म शिखे बिहेवियर सब शिखे है वेज ऑफ इंटरैक्टिंग विद इन सोसाइटी देखिए आमर सोशलाइजेशन होची लर्निंग सोसाइटी देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच agents play an important role in a child socialization कहतु चाइल्ड सोशलाइजेशन रो important role कोटा हम देखु only टेक्स्ट बुक्स ना only examinations ना पेरेंट्स टीचर्स एंड peers ना only स्कूल बिल्डिंग्स कोटा हम फ्रेंड्स आमर एटा हूँ इम्पोर्टाट रोल आमर पेरेंट्स टीचर्स पियर्स समस्ते समस्ते आमर करें नुहे कि पियर्स भी टीचर भी आमर पेरेंट भी समस्ते मिसी सोशल एनवायरनमेंट बनाती पिलापाई है देखो पीटीपी हूँ पेरेंट प्लस टीचर प्लस पियर्स समस्ते मिसिकी पिलार डेवलपमेंट रे हेल्प करिथांती देखो व्हिच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट एड्रेसेस जेंडर स्टेरियोटाइप एटा मोर सीटेट रे पढ़िला देखंतु कहतु जेंडर स्टेरियोटाइप जो होता है कौटा आमर कहतु हम गिविंग बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंट एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस ना एनकरेजिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स ना assigning activities according to traditional gender roles ना एवॉइडिंग डिस्कशन ऑफ जेंडर कौटा हम फ्रेंड्स ऑप्शन भी देखो एनकरेजिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स है जोटा कि बेस्ट हम आमर ये कौन स्टेरियोटाइप नहीं है आम पुओ झील को केबे आम अलग भाबानी तो सहीटा ऑप्शन बी देखो जेंडर इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस स्टेरियोटाइप्स रेदर देन रेनफोर्सिंग ट्रेडिशनल रूल्स है जेंडर इक्वालिटी हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी आम दबा पिला देखो ए टीचर कॉन्शियसली एवॉइड्स assigning classroom duties according to gender this promotes एटा कौन प्रमोट करुच्ची कहतु जेंडर स्टेरियोटाइपिंग जेंडर इक्वालिटी ना आमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना जेंडर सेग्रीगेशन कौटा हम फ्रेंड्स आमर देखु एटा हूँ हम आमर जेंडर इक्वालिटी है जोड़ा कि टीचर हूँ एवॉइड कर एसाइनिंग क्लासरूम ड्यूटी को है जो आमर जेंडर इक्वालिटी देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो आमर गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइसेस एंड एबिलिटी रेदर देन जेंडर प्रमोट्स इक्वालिटी है यहाँ हूँ कौन हम एबिलिटी नॉट जेंडर है एबिलिटी को आम फोकस करवा नुहे कि जेंडर को देखो which statement about gender is most appropriate from a social constructivist perspective कहतु कौटा आमर social constructivist perspective हम gender roles are shaped partly by social and cultural expectations gender roles are entirely biological सेमती नुहे एटा नो रिलेशन एमती हेनी gender roles are identical all कल सेमती नहीं ऑप्शन ए ही ठीक अच्छी है ऑप्शन ए देखो जेंडर रोल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल प्रैक्टिसेस है जेंडर रोल्स हूँ सोसाइटी प्लस कल्चर देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए चाइल्ड हु मेक्स अप unusual solutions to problems is demonstrating कहतु कौन हम यहाँ मोर सीटेट रे पड़ता
क्रिएटिविटी ना रोट मेमोरी ना कन्फर्मिटी हमर पैसिव लर्निंग कोटा हम फ्रेंड्स हमर क्रिएटिविटी ही बढ़िया कथा लिखाई क्रिएटिविटी है चाइल्ड हूँ जी कि अनयूजुअल सॉल्यूशन को आमर करते देखो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स ओरिजिनली फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू जनरेट न्यू और यूजफुल आइडियाज है न्यू प्लस ओरिजिनल आइडिया हूँ क्रिएटिविटी देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन डाइवर्जेंट थिंकिंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ आमर डाइवर्सिटीटा आमर को देखो कौन हम डाइवर्जेंट थिंकिंगटा producing one predetermined answer ना producing multiple possible responses ना memorizing information ना copying a model answer कोटा हम producing multiple possible responses तेले सीना डाइवर्जेंट थिंकिंग हम पिला डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्स को चूज करिवो भाबिबो तापरे कहबो नुहे कि ऑप्शन बी है ऑप्शन बी हम आंसर देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल आइडियाज और सॉल्यूशन है मल्टीपल पॉसिबल आइडिया से भाबिबो डाइवर्जेंट होची मेनी डायरेक्शन बहुत गुड़ा डायरेक्शन एटा हेतिले एटा हेबो हला तापर देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग जनरली इन्वॉल्व्स कोंतु कौन हम जनरेटिंग अनलिमिटेड आइडियाज प्रोड्यूसिंग ए सुइटेबल सिंगल आंसर एवॉइडिंग रीजनिंग गेसिंग रैंडमली कौन हम फ्रेंड्स प्रोड्यूसिंग ए सुइटेबल सिंगल आंसर एटा तो यहाँ हो पार कन्वर्जेंट जो यहाँ कन्वर्जेंट गोटे ही आंसर से भाव नुहे कि ऑप्शन बी देखो हम कन्वर्जेंट थिंकिंग नेरोज पॉसिबिलिटीज टू रीच द मोस्ट एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है कन्वर्जेंट हूँ कम टुगेदर है वन आंसर गोटे ही आंसर हम देखो नेक्स्ट which teacher response is most appropriate when a learner gives an incorrect answer कौन हम से कही टीचर रेस्पॉन्स जो करुँच मोस्ट एप्रोप्रिएट जोटा हम केतेबेले लर्नर गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर जो इनकरेक्ट आंसर दिखाऊ से कहूँ कौन हम रिडिकुल द लर्नर ना इमिडिएटली गिव द आंसर explore the learner's reasoning and provide feedback ignore the learner performance कौन हम ऑप्शन सी टा देखो explore the learner's reasoning and provide feedback यहाँ ही बढ़िया कथा लिखाई देखो the teacher should understand the learner's thinking identify misconceptions and provide constructive feedback है wrong answer हो understand thinking feedback कहबा हमें देखो which classroom environment is most conducive to learning कोटा हम कहतु कौ क्लासरूम एनवायरनमेंट आमर कंडक्टिव टू लर्निंग हम fear based ना हाईली पॉजिटिव ना सपोर्टिव एंड रेस्पेक्टफुल ना कंप्लीटली साइलेंट कौन हम आमर सपोर्टिव हम रेस्पेक्टफुल हम देले सिना बढ़िया हम नुहे कि ऑप्शन सी देखो ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन क्वेश्चनिंग आउ कोऑपरेशन एंड रिस्क टेकिंग इन लर्निंग बुझीपारे रेस्पेक्ट प्लस सेफ्टी हेले बेटर लर्निंग हो पार देखा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू सॉल्व ए कॉमन प्रॉब्लम टीचर कौन करुँच छोट छोट ग्रुप बन दौरान गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कौन कोऑपरेटिव लर्निंग एटा तो कोऑपरेटिव होची ना कोऑपरेट कर समस्ते जड़े आउ जन को देखो कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड ए शेयर्ड एकेडमिक गोल है कोऑपरेट होची लर्न टुगेदर मिसिकी शिखा समस्ते आंसर देवाई चेष्टा करूँ है व्हिच इज एन इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग कोटा कोऑपरेटिव लर्निंग इंपोर्टेंट फीचर नो इंटरेक्शन जमा भी नुहे पॉजिटिव इंटरडिफरेंस आउ इंडिविजुअल कंपटीशन ओनली टीचर डज ऑल वर्क सेमती नाई एटा हम ऑप्शन बी देखंतु पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है ऑप्शन बी देखंतु इन कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन वन अनदर एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड ए कॉमन लर्निंग गोल है कोऑपरेटिव होची वी नीड ईच अदर एटा हम देखिबा हमरा नेक्स्ट क्वेश्चन peer learning can be particularly useful because peer learning टा particularly useful होता है कौन पाई देखंतु students can explain concepts using language familiar to peers एटा हबो ना teachers become unnecessary ना learning becomes purely competitive ना individual differences disappear कोटा हबो friends
देखो एटा तो हेनी एटा भी हेनी एटा भी हेनी एटा ही आमर हो पार एटा भल अच्छी ऑप्शन ए देखो peer interaction can provide explanations है example and perspective that may be accessible to classmates है peer हो peer explanation देखिए आमर next which role is most appropriate for a teacher in a child centered classroom कहतु child centered classroom रे कोटा हबो कहतु हमर एटा सीटेट रे पडितला देखंतु सोल अथॉरिटी ना फैसिलिटेटर ना डायरेक्टर ऑफ एवरी रेस्पॉन्स ना पैसिव ऑब्जर्वर कोटा हबो ना डायरेक्टर ऑफ एवरी रेस्पॉन्स एटा तो नुहे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रे हमर टीचर सबले फैसिलिटेटर भाबरे काम करिवे हैला एगुडा नुहे एगुडा हबो नाही बिल्कुल भी टीचर सबले फैसिलिटेटर हेबे हैला ऑप्शन बी देखंतु दैट टीचर facilitates learning by creating meaningful experiences, asking questions and supporting learners है लर्नर मान को सपोर्ट करेंगे जोटा कि चाइल्ड सेंटर कहबा आमे टीचर होची फैसिलिटेटर भाव में काम करेंगे ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम प्राइमरीली फोकसेस ऑन कहतु कौन हम एटा सीटेट रे पड़ीला 2022 रे देखंतु चाइल्ड सेंटर क्लासरूम विषय पचारि टीचर्स कन्वीनियंस ना लर्नर्स नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस हाँ यहाँ ठीक कथा लर्नर नीड कथा आम फोकस करवा यहाँ ही हम है आउ बेस देखा आम ऑप्शन बी गुड़ा तो ओनली अच्छी हम ना नेगेटिव वर्ड आउ है ऑप्शन बी देखंतु चाइल्ड सेंटर पेडागोजी कंसीडर्स लर्नर्स इंटरेस्ट एक्सपीरियंसेस एबिलिटीज एंड डेवलपमेंटल नीड्स है चाइल्ड सेंटर हो चाइल्ड नीड को देखा फास्ट आम व्हिच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर एनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर कॉन्सेप्ट कहतु कौटा हम आमर कौ मेथडटा आमर पिला मानकु एनकरेज करिथा इन्वेस्टिगेट करिथा डिस्कवर कॉन्सेप्ट करिथा कहतु कौटा डिस्कवरी लर्निंग ना डिक्टेशन कौन हम डिस्कवर कर माने डिस्कवरी लर्निंग हम नुहे कि ऑप्शन ए हम आंसर देखो डिस्कवरी लर्निंग गिव्स लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर इन्वेस्टिगेट एंड अराइव एट कॉन्सेप्ट्स थ्रू गाइडेड एक्सपीरियंसेस है एक्सप्लोर हो डिस्कवर आउ लर्न सबू देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रूनर स्पाइराल करिकुलम सजेस्ट दैट एटा सीटेट रे पढ़िला देखो कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट ओनली वंस the important concept can be revisited at increasing levels of competency our students should avoid difficult concept ना our previous learning should be ignored कोटा हबो ऑप्शन बी टा हबो हमर नुहे कि ऑप्शन बी हबो हम आंसर देखंतु ऑप्शन बी देखंतु स्पाइरल करिकुलम revisits important concepts repeatedly while increasing their depth and competency देखो स्पाइराल हो रिपीट प्लस डिपन यहाँ हम देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मीनिंगफुल लर्निंग कहतु कौटा आमर मीनिंगफुल लर्निंग को डिस्क्राइब करुच्ची मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग ना कनेक्टिंग न्यू नॉलेज विथ एक्जिस्टिंग नॉलेज यहाँ ही बढ़िया कथा लिखी नुहे कि यहाँ ही आम डिस्क्राइब करुच्ची आम लर्निंग को बहुत भल से नुआ नॉलेज जिते शिखापी जावा पूर्वर आम पुराणा नॉलेज सहित कनेक्ट करवा यहाँ बढ़िया कथा लिखाई देखु ऑप्शन बी ही हो पार आम आंसर है ऑप्शन बी देखो देखिले हाँ तो यहाँ हम मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स व्हेन लर्नर्स कनेक्ट न्यू इनफॉरमेशन विथ रिलेवेंट प्रायर नॉलेज है कनेक्ट कले ही अंडरस्टैंडिंग बहुत भल हो पार यहाँ मुझे फास्ट कही आप देखो यहाँ सीटेट पढ़ी 2022 व्हिच टीचिंग प्रैक्टिस इज लीस्ट लाइकली टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग कहतु कौन हम रिलेटिंग कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ना एनकरेजिंग डिस्कशन peer मेकानिकल मेमोराइजेशन ना कनेक्टिंग न्यू आइडियाज विथ प्रायर नॉलेज कौटा हम फ्रेंड्स आम कनेक्टिंग जेहेतु यहाँ तो सब बढ़िया कथा लिखाई देखो से लिस्ट देखो यही जिनटा भल भाव में ध्यान देवे है यहाँ तो बहुत बढ़िया कथा लिखी सी तेणु यहाँ भी यहाँ हो पार आम रिलेटिंग कॉन्सेप्ट रियल लाइफ यहाँ भी बढ़िया कथा एनकरेजिंग डिस्कशन हाँ
बट ये गोटे कौन मेमोराइजेसन कथा आस मैंने तो हम ना आम आंसर तो बट से जेहतु लिस्ट पचार तेणु आमर ऑप्शन सी हम आंसर देखो मेकानिकल मेमोराइजेसन विदाउट अंडरस्टैंडिंग डज नॉट प्रमोट डीप एंड मीनिंगफुल लर्निंग है मीनिंगफुल लर्निंग केबे भी हो पारिबनी मेमोराइज कथा कहले मीनिंगफुल लर्निंग हो पारिबनी घुसी दब खाली जिनसटा ए टीचर यूजेस रियल लाइफ सिचुएशंस टू एक्सप्लेन ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गोटे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बुझाई टीचर कौन करा रियल लाइफ एग्जांपल दौरान दिस मेनली हेल्प्स लर्नर्स टू एटा कौन लर्नर को मैं हेल्प करुच्ची कहतु सीटेट रे पढ़ी देखो आमर कनेक्ट लर्निंग विथ एक्सपीरियंस हाँ यहाँ बहुत बढ़िया कथा एवॉइड अंडरस्टैंड सेमती ना आमर ऑप्शन एटा ही बढ़िया कथा लिखाई ऑप्शन ए हम आम आंसर देखो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट help learners connect abstract concept with familiar experiences है रियल लाइफ हूँ रियल अंडरस्टैंडिंग देखो which assessment is primarily used to identify learning difficulties कहतु कौन हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट ना समेटिव असेसमेंट ना सर्टिफिकेशन असेसमेंट ना रैंकिंग असेसमेंट कौटा हम आमर प्राइमरी आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी जोटी होची सेटा होची आमर कौन डायग्नोस्टिक असेसमेंट डायग्नोस करवा है पिला मानकर कौन प्रॉब्लम अच्छे ये बुझा डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डिफिकल्टीज मिसकनसेप्शन एंड लर्निंग गैप्स है यहाँ तो बुझी था आमर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड इज जेनेराली कौन हम यहाँ हूँ एंड कही तो समेटिव हम बेस देखा आम ये जाचु आम जेहेतु एंड रे देखो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट फॉर लर्निंग मेनली एम्स टू यहाँ सीटेट पढ़ा 2024 कौन रैंक लर्नर्स जमा भी नुहे इम्प्रूव ऑनगोइंग लर्निंग हाँ यहाँ ठीक कथा इम्प्रूव करवा ऑप्शन बी हम आंसर देखु असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रोवाइड्स एविडेंस दैट हेल्प्स टीचर्स एंड लर्नर्स इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस मन रहा समस्तकर है इम्प्रूव करवा लर्निंग को देखा नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज जेनेराली एसोसिएटेड विथ कौन हम कहतु फ्रेंड्स यहाँ हूँ आम सीटेट पढ़ी 2023 देखु जेहेतु असेसमेंट ऑफ लर्निंग पचारि क्वेश्चन रू आप जानापी बुझापी चेष्टा करूँ आमर कौन बा समेटिव तो समेटिव कौटे जाऊँ देखो जजिंग अचिवमेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शन हाँ यहाँ हो पाए कंटिन्यूअस फीडबैक जमा नुहे यहाँ हूँ आमर फॉर्मेटिव आउ हूँ आइडेंटिफाइंग मिसकनसेप्शन यहाँ फॉर्मेटिव पीयर डिस्कशन यहाँ भी हेनी ऑप्शन ए हम आंसर देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज जेनेराली समेटिव एंड फोकसेस ऑन जजिंग व्हाट लर्नर्स हैव अचीव्ड है कौन लर्नर अचीव कर से कथा कही अचीवमेंट जोटा कि आफ्टर द एंड यहाँ हम देखो नेक्स्ट व्हिच फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग कहतु कौ फीडबैकटा आमर लर्निंग को इफेक्टिव करें इम्प्रूव करने लर्निंगटा देखो कौटा हम आमर रॉन्ग ना गुड ना स्पेसिफिक फीडबैक एक्सप्लेनिंग स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज यहीटा ही हम है ऑप्शन सी देखो इफेक्टिव फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टिव आउ एक्शनेबल होता है गुड फीडबैक हूँ स्पेसिफिक प्लस कंस्ट्रक्टिव देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए पोर्टफोलियो इज पर्टिकुलरली यूजफुल बिकज ये पोर्टफोलियोटा आमर पर्टिकुलर यूज होता है कहतु कौन पाई shows evidence of learning over time ना measures only memorization जमा भी नुहे replaces all teaching जमा नुहे gives only एटा भी हबनी ऑप्शन ए टा ही ठीक कथा लिखा है ऑप्शन ए हम आम आंसर है देखो देखा आमर ए पोर्टफोलियो कंटेंट सिलेक्टेड वर्क दैट डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोग्रेसेस लर्निंग एंड डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है पोर्टफोलियो हूँ प्रोग्रेस ओवर टाइम बुझीपारे समस्ते देखा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट रिक्वायर्स लर्नर्स टू एटा आमर देखंतु पढ़ी सीटेट रे 2023 रे इभालुएट देयर ओन लर्निंग यूजिंग सुइटेबल क्राइटेरिया इभालुएट ओनली देयर क्लासमेट सेमती हेनी एवॉइड रिफ्लेक्शन एटा भी हेनी डिपेंड एंटायरली ऑन टीचर सेमती ना इभालुएट देयर ओन लर्निंग यूजिंग सुइटेबल क्राइटेरिया जेहेतु सेल्फ असेसमेंट कथा पचारि यहाँ ध्यान दौते सेल्फ असेसमेंट पिला निजे ही एसेस करेंगे नुहे कि ओन लर्निंग देखो ऑप्शन ए रे ही अच्छी ऑप्शन ए हम देखो सेल्फ असेसमेंट एनकरेजेस लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट है सेल्फ हूँ मैं ओन लर्निंग बुझीपारे समस्ते देखिए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन when learners evaluate each other's work using agreed criteria it is called एटा कौन हम कहतु डायग्नोस्टिक असेसमेंट ना पीयर असेसमेंट
आमर प्लेसमेंट असेसमेंट ना सबमिटिव एग्जामिनेशन कोटा हम फ्रेंड्स एटा आमर कौन हम ना हूँ इच अदर वार हो जो एटा हम आमर ऑप्शन देखंतु ऑप्शन बी है पियर असेसमेंट कहीं जो पिला माने निजे निजे जड़े आउ जो गोटे पिलार जो कौन केते मार्क रखिले जदि कौन भूल कले से जो एसेस करि थांदी ना सेटा को हम कहि थाउ पियर असेसमेंट सेटा ही लिखाई सेटा ही पचारि आमर देखंतु पियर असेसमेंट इनवॉल्व स्टूडेंट्स रिव्यूइंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन वन एनदर्स वर्क है पियर होची क्लासमेट देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच असेसमेंट मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ए रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट कहतु प्रॉब्लम सॉल्विंग आमर कौन हो पार रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट ऑथेंटिक असेसमेंट ना रिकॉल टेस्ट ओनली ना ट्रू और फॉल्स ओनली ना डिक्टेशन कौन हम आमर रियल लाइफ सिचुएशन रे जो हम आमर ऑप्शन ए है ऑथेंटिक असेसमेंट देखो ऑथेंटिक असेसमेंट रिक्वायर्स लर्नर्स टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू मीनिंगफुल रियल वर्ल्ड टास्क बुझीपारे फ्रेंड्स देखो आमर रियल टास्क हूँ ऑथेंटिक असेसमेंट देखिए आमर लास्ट क्वेश्चन ए टीचर यूजेस ए शॉर्ट क्विज ड्यूरिंग ए लेसन एंड चेंजेस द टेस्ट एक्टिवली बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स दिस इज एटा कहतु कौन हम टीचर हूँ पचारुंट कौन ना सर्ट क्विज किसी क्विज पचारुंट किसी लेसन पढ़ाइबा से किसी क्विज पचारुंट ड्यूरिंग है ड्यूरिंग रे ड्यूरिंग वर्डटा देती देखो ड्यूरिंग बुझीपारे तो आमर ड्यूरिंग रे जोटा होता है सेटा हूँ कौन आमर रिजल्ट नेक्स्ट एक्टिविटी तापर देखुं तो कौन हम यहाँ आमर ऑप्शन ए हम है ऑप्शन ए हम आंसर देखो ऑप्शन ए द असेसमेंट इज बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू मॉडिफाई टीचिंग एंड इम्प्रूव लर्निंग यहाँ हूँ आमर ड्यूरिंग लेसन रे जोटा होता है आउे मॉडिफाई टीचिंग होता है सर कौन आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझीपारे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज आम कंप्लीट कले 660टा क्वेश्चन तो पुणी नेक्स्ट आउ करूँ पुणी काली देखा गोटे नुआ वीडियो रे तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक कर दिंतु थैंक यू सो मच।